Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class we are going to discuss about NITI Aayog's Fiscal Health Index. Actually this index has been released very recently and actually NITI Aayog for the first time have come up with this index called as Fiscal Health Index. तो ये पहली बार लाया गया है Fiscal Health Index, इसीलिए ज़्यादा important है and that is why it is important because this is for the first time that index named Fiscal Health Index has been released by NITI Aayog. So we will discuss about it, what exactly it means. Okay. And then we will discuss something about NITI Aayog also because we have seen questions in the past from NITI Aayog and all. तो उससे भी हम लोग उससे related भी कुछ चीजें हम लोग जानेंगे. Okay. So if I'm audible, visible, everything is fine, please write yes. So that we can start our session. अगर मेरी आवाज आ रही है, please write yes in the comments. तो अच्छा, before moving on, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब कर देना. लाइव सेक्शन में जाना. यस्टरडे वी डिड क्लास ऑन बजट. तो ये जो मैंने किया था ये इसको मैंने इंग्लिश में किया था. ठीक है, इंग्लिश मतलब होता है कि द टेक्स्ट इज इन इंग्लिश बट आई एम स्पीकिंग हिंदी. और ये वाला गोविंद सर ने किया था, एक फुल इंग्लिश में था. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है लैंग्वेज के हिसाब से आप देख सकते हो. ठीक है, सो प्लीज गो एंड वॉच इट बिकॉज बजट इज जनरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बजट से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम में, जैसे उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स की कुछ बात हुई एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो उससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इसीलिए दैट इज व्हाई बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम देयर. द सेकंड थिंग इज tomorrow at 6 p.m. tomorrow यानी मंडे को 6 p.m. पे आई विल बी हैविंग अ क्लास एक्सप्लेनिंग सम इकोनॉमिक टर्म्स. ठीक है, why? Because there are a lot of terms which are mentioned in budget and economic survey which perhaps might be difficult for you, and there are questions in the past also in different exam की statutory liquidity ratio क्या होता है, cash reserve ratio, repo rate, fiscal deficit, ठीक है, primary deficit. So these are the things also I will be discussing tomorrow at 6 p.m. class. So please watch it. Monday को 6 p.m. पे this class Monday 6 p.m. पर होगी where I will discuss about important economic terms. So that would be very helpful because after watching this, you will be more easily able to understand the budget. उसके बाद क्या होगा, ट्यूसडे को at 6 p.m. we will be having session on economic survey. ठीक है, तो ट्यूसडे को 6 p.m. पर economic survey की क्लास लूंगा. This is also very important and it is linked to the budget because economic survey tells you the entire thing about how the Indian economy is there, है ना, the datas and etc. जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, so that is what also the basic thing you should be knowing. So please watch tomorrow's class Monday 6 p.m. and Tuesday 6 p.m. class also. और आज 8 बजे ये वाली क्लास होगी. Those who are attempting AMU, JAMIA, MHCT, you can watch this class as well. ठीक है, so let us begin with today's topic. So am I audible, visible, everything is fine? आवाज आ रही है, वॉइस इज क्लियर? तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स. ठीक है, ओके, तो फिस्कल हेल्थ का क्या मतलब होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी व्हाट इज फिस्कल. इफ आई यूज द वर्ड फिस्कल, इसका मतलब क्या होता है? इफ यू टेल मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आपको ये सब टर्म पता है. सो फिस्कल मींस फाइनेंशियल, है ना, पैसा से रिलेटेड. हेल्थ मतलब जैसे अगर किसी का मान ली कोई आदमी है उसका फिस्कल हेल्थ पूछा जाए तो क्या मतलब हुआ? इफ आई एम आस्किंग समवन्स फिस्कल हेल्थ, it means that if person is earning, how much person is earning and is his earning good enough to feed his necessity, है ना. मान ली, है ना, मान ली कोई आदमी है अब वो 100 रुपये कमा रहा है और 200 रुपये खर्च कर रहा है. Is it, should we say that the fiscal health of the person is good or not? If a person is earning 100 rupee and is spending 200 rupee, it means his fiscal health is very bad. क्यों? Because उसका fiscal deficit 100% है. मतलब 100 रुपए कमा रहा है और 100 रुपए एक्स्ट्रा लोन ले रहा होगा, तब ना 200 रुपए खर्च कर रहा है. So he must be taking 100 rupee loans. अगर ओरिजिनली उसके पास कोई पैसा नहीं है और 100 रुपए कमा रहा, 200 खर्च कर रहा है, it means he is taking 100 rupees loan also. So it means this person's fiscal health is not very good. So fiscal health का मतलब होता है कि भाई आपके revenues, so whatever your revenues are and what are your expenditures and what is the gap between that and all, है ना, कि आप बहुत ज्यादा तो नहीं खर्च कर रहे हो. If you are taking too much loans, if your fiscal deficit is too high,
then it means actually that your fiscal your state's fiscal health is not very good. उस state का fiscal health ज़्यादा अच्छा नहीं है. So fiscal deficit, I hope you can understand. अभी मैं simple language में बताता हूँ. For example, जैसे अभी हमने example दिया है, एक आदमी है, so there's an X person, और उसके पास मान लो अभी 0 रुपया है, is having 0 rupees. Now what he does is in this month he earns 1,000 rupees in 1 month. I'm just giving example. In 1 month, but he spends, let's say 1,200 rupee. So this is earning income and this is expenditure. Okay, so how it happens? How can you believe that if someone is earning 1,000 rupee, how can someone spend 200? So he must have taken 200 rupee as loan. कर्जा लिया होगा उसने. So this is fiscal deficit, है ना. इसका fiscal deficit क्या हो जाएगा? 200 रुपया is his fiscal deficit. But we actually generally calculate on the with respect to percentage of GDP. अगर India level पर देखते हैं, so we calculate as a percentage of GDP. So generally we say, मतलब loans taken. Fiscal deficit means so the gap between the income and expenditure, which is actually generally filled by the loans. That's the idea of fiscal deficit. So fiscal deficit ideally should be very low. अगर zero है तो और अच्छा है, generally speaking, that you are not taking any loan. So individual level पे कहा जाता है कि if you do not have any liability or if your fiscal deficit is zero, it is good. But the government level पर हम बात करते हैं, when we talk at the government level, of course, since India is a developing country, we have to take some sort of loans. Okay, so generally कहा जाता है कि 3% of fiscal deficit is generally considered as good enough, healthy. तो मैं कल की क्लास में, tomorrow 6 p.m. class में I will discuss it in detail, that there are some laws regarding it, that if you 3% of fiscal deficit means 3% of total GDP, है ना. If the government is having that much fiscal deficit, then it is okay. ठीक है. खैर, we will discuss this in detail in tomorrow 6 p.m. class. Okay, so when I'm talking about fiscal health index, it means we are saying ki how much, this is basically with respect to the different states. So they have come up with the fiscal health of different states. हर state का fiscal health कैसा है, किसका finances अच्छा है, किसका बुरा है. So that is what is actually this. And this has come for the first time, इसलिए important है. This index has been published for the first time by NITI Aayog, इसलिए और ज़्यादा important हो जाता है. Generally, there are a lot of indices of NITI Aayog, but some of them becomes important like this one because of being published for the first time. Now, before moving on to this, let's talk something about NITI Aayog. So here is the first question. Who is the vice chairman of NITI Aayog or chairperson? Mr. Suman Beri, Mr. BVR Subramaniam, Mr. Bibek Debroy, Mr. Amitabh Kant. What is the right answer? Please tell me, I'll be very happy to know. बताइए. The right answer is? Yes, A is the right answer. Mr. Suman Beri is the right answer to this question. ठीक है. Okay, the next is who is the CEO? Yes, Agastya Iyer, you're right. A is the right answer. Who is the CEO, Chief Executive Officer of NITI Aayog? Mr. Suman Beri, Mr. BVR Subramaniam, Bibek Debroy, Mr. Bibek Debroy, Mr. Amitabh Kant. What is the right answer? CEO of NITI Aayog. Yes, the right answer is option B. Mr. BVR Subramaniam is the right answer. Yes, Agastya Iyer, very good. अच्छा, एक दो और सवाल पूछ रहे हैं. मैंने वाइस चेयरमैन पूछा, अगर मैं ये पूछा हु इज द चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, देन व्हाट शुड बी द आंसर? तब क्या आंसर होगा? Chairman, yes, / chairperson of NITI Aayog. So the answer would be yes. So the Prime Minister. So the Prime Minister of India, PM Modi, is actually the chairperson or chairman of NITI Aayog. ठीक है. अच्छा, एक दो और सवाल पूछा हूं. ये दोनों का आप जानते हो, उसमें से दोनों में से कोई एक का नाम बता सकते हो? वाइस मिस्टर बिबेक देबरॉय, फेमस मींस व्हाट, और मिस्टर अमिताभ कांत. बिकॉज जो भी मैंने ऑप्शन दिया है वो किसी रीजन से दिया हूं. अदर ऑप्शंस आल्सो. At least please tell me about Bibek Debroy, because he died recently, I think 1 or 2 months back. He was actually Padma awarded this year. Very good, Agastya. Great. So
So he was actually the chairman of Prime Minister's Economic Advisory Council, PM Economic Advisory Council के, ठीक है. और अमिताभ कांत जो एक्स सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के, मींस अर्लियर ही हैज सर्व्ड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है. So Vivek Dobrai was actually the chairman of Prime Minister's Economic Advisory Council. He died recently. और मैंने ये पद्मा अवार्ड्स वाली क्लास में बताया भी था. So those who have not watched Padma Awards class, please go and watch. इसको आप सर्च करना ये चीज, just search this on YouTube. You will get this video, ठीक है, and you will get to know about the Padma Awards, where I have discussed about Mr. Vivek Dobrai also getting the award. So he's actually chairman of, he was chairman of Prime Minister's Economic Advisory Council, ठीक है. ये सब याद रखिएगा, खास के ये वाले इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो न्यूज में रहते हैं ना उसे सवाल आता है, तो दे डू मेक क्वेश्चंस एंड ऑल. हाँ, so we are talking about this. NITI Aayog chairperson is Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister Modi, and then Vice Chairperson is Mr. Suman Beri, and CEO is Mr. BVR Subramaniam. Parent of body जो है Ministry of Planning कहलाते हैं, ठीक है. That is what you should know. The next is name the institution which preceded the NITI Aayog. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने कई एग्जाम में देखा है पूछते हुए, ठीक है. Preceded the NITI Aayog means, और ऐसे उलट के पूछते हैं कि NITI Aayog is a successor of which organization. या ऐसे पूछते हैं कि नीति आयोग रिप्लेस्ड विच ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नन ऑफ द अबव. यस अगस्त्य अय्यर, वेरी गुड. द राइट आंसर इज प्लानिंग कमीशन. अच्छा, अब मैं एक चीज पूछता हूं कि प्लानिंग कमीशन को कौन से बॉडी में डाला जाएगा? स्टैचुटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर स्टैचुटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल. प्लानिंग कमीशन कौन से कैटेगरी में आता है? स्टैचुटरी बॉडी समझ ना, जो पार्लियामेंट व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री लॉ और व्हिच डिराइव्स इट्स पावर. कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी व्हिच इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. नाइदर स्टैचुटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों में से कहीं नहीं हो. सो व्हाट शुड बी द आंसर? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग. I have seen. Very good, Agastya. Great. So neither statutory nor constitution. This is the case for planning commission as well as नीति आयोग. ठीक है. So दोनों के केस में मैं बताता हूं, दोनों के केस में both are neither statutory nor constitutional. ठीक है. Body. That is what you should know. Okay, so let's move on further, है ना. तो नीति आयोग आप देख सकते हो, this was actually planning commission जो था PCM writing started in March 1950, set up by Jawaharlal Nehru as the prime minister. So when he was the prime minister, so it was abolished in 2014 when Prime Minister Modi came to power. And then what happened was in January 2015, it is now replaced with NITI Aayog. ठीक है. So that is what you should be knowing about. है ना. तो आप देख सकते हो वाइस चेयरमैन इज मिस्टर सुमन के बेरी. तो ये मैं इसी रिपोर्ट से निकाला हूं, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द सेम रिपोर्ट, ठीक है. देन वी हैव मिस्टर बीवीआर सुब्रमण्यम, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट नीति आयोग, देन आई विल डिस्कस अबाउट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स. सो हु अमंग द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल? पूरा है ना. चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, Chief Minister of all Union Territory with legislature, Lieutenant Governor of Union Territory without legislature. इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 1 and 2, 1, 2 and 3 and 3. ठीक है. तो ये तीन ऑप्शन है, 1, 2 और 3, और ये नीचे ABCD है. तो कौन ABCD में से चूज करके बताना है, बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड विद नीति आयोग आल्सो यू शुड बी नोइंग. आपको पता होना चाहिए. So the right answer is C is the right answer, है ना. CM of all states, CM of all union territory with legislature, Lieutenant Governor of union territory without legislature. Yes, Agastya, you're right. C is the right answer. तो अगर आप देखोगे तो सारे लोग उसमें होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, सारे स्टेट्स के. जहां जहां यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर कौन कौन सा होगा? तो दिल्ली हो गया, फिर अब तो जम्मू एंड कश्मीर, यहां भी इलेक्शन हो गया, देन पुडुचेरी, है ना, जहां एमएलए होते हैं, इलेक्शन होता है.
और जहां नहीं इलेक्शन होता वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार एटसेट्रा ना, चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। मैं कुछ और इंडाइसेस, तो मैं एम जस्ट शोइंग यू दैट द रीसेंट इंडाइसेस पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ये जनवरी में लाया गया, अभी रिसेंट है ना। उससे पहले न्यूज लेटर नीति संधान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो सारे ट्रेड वॉच लाया गया क्वार्टरली एंड ऑल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, विच वी विल डिस्कस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। फिर और भी देखो इतनी सारी रिपोर्ट्स आती है नीति आयोग की, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर यू एवरीवन बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है। सो गो एंड फाइंड आउट एसडीजी इंडिया इंडेक्स में विच स्टेट इज एट द टॉप। ये क्वेश्चन आया हुआ है एलेट में, आई थिंक आया हुआ है, ठीक है। सो दे डू आस्क क्वेश्चंस, एसडीजी इंडिया इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने क्लास ऑलरेडी आई हैव टेकन, so just go on YouTube and search this SDG career launcher, you will get this video. Or I have explained about sustainable development goals, all the 17 sustainable development goals, and then I have discussed about in the last that winner, yes, Kerala is at the top, very good Agastya. तो जो important indices है नीति आयोग का वो मैंने आपको हाईलाइट भी करा दिया, ठीक है। so that is what you should know. फिर और ये सब है, ठीक है ना। so these are the indices of नीति आयोग और the reports that came, खैर तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। अब हम लोग इस पर चलते हैं। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल हेल्थ, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज फिस्कल ईयर एंड व्हाट आर इट्स क्वार्टर्स। बताइए, क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। फिस्कल ईयर किसको कहते हैं, कब स्टार्ट होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स, इन विच मंथ इट स्टार्ट्स एंड इन विच मंथ इट एंड्स। जैसे यस्टरडे वी हैव सीन बजट, सो बजट ऑफ 2026 presented. So what does this mean? I have told you in the budget class also. 1st April से 31st March. Great, Agastya. हाँ. It means this budget is for from 1st April 2025 till 31st March 2026. इसके लिए बजट है ना. And if I say quarters, quarters का मतलब हुआ, what is the meaning of quarters? Quarters of fiscal year, क्या मतलब हुआ इसका? तो क्वार्टर्स का मतलब हुआ 12 मंथ्स में डिवाइडेड बाय 4 है ना, 1/4 को कहते हैं ना क्वार्टर। सो इट मींस 1 क्वार्टर विल हैव 3 मंथ्स। सो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 3 मंथ्स का पीरियड ईच। यस अगस्त, वेरी गुड। 3 3 6 3 9 3 12 महीने का, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऐसा होगा ना, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, लाइक दिस। सो दैट इज व्हाट, दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट फिस्कल ईयर, क्वार्टर्स एटसेट्रा, ये सब पता होना चाहिए। सो जैसे हम लोग वी विल डिस्कस इट इन इकोनॉमिक सर्वे क्लास इन डिटेल। जैसे फिस्कल डेफिसिट इस साल जो है 4.4% रहेगा, तो ये फिस्कल टर्म से ही रिलेटेड है ना, बट वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन इकोनॉमिक सर्वे। चलो लेट्स मूव ऑन टू द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्लास. And here's a passage, please read it and then answer me. Who is X in the passage? So the NITI Aayog's report Fiscal Health Index was released by whom? So it was released by the chairman of 16th Finance Commission. Who is the chairman of 16th Finance Commission? बताइए। देखो विवेक देबराय, he died actually. तो जनवरी में रिपोर्ट रिलीज हुई, वो लास्ट ही मंथ उनकी डेथ हो गई, मतलब दिसंबर, नवंबर या दिसंबर में, तो ये तो होगा नहीं आंसर। एंड 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अगर आपको पता है, यू कैन आंसर यस, मिस्टर अरविंद पानागरिया। ये अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द नीति आयोग वाइस चेयरमैन आल्सो, है ना। अभी वो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, एंड ही हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट इन प्रेजेंस ऑफ सुमन बेरी, मिस्टर सुमन बेरी, है ना, देन अरविंद वेरमानी एंड CEO ऑफ नीति आयोग मिस्टर BVR सुब्रमण्यम एटसेट्रा, है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, जो दिस पर्सन इज मिस्टर अरविंद पानागरिया, ठीक है। So the right answer is C is the right answer to this question. Okay. अच्छा, फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन सी बॉडी है, बिकॉज ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इस फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैचुटरी बॉडी, विच टाइप ऑफ बॉडी?
कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी? It is the constitutional body mentioned in which article? नहीं जी, constitutional body है. Finance Commission is a constitutional body set up every 5 years by President of India. Okay, which article? पता होना चाहिए सब. 280, very good. अगस्त, great. हाँ, अब सही हो. ठीक है, so article 280 talks about it, है ना? President, है ना? Set up this. So that is what. So he is actually the 16th Finance Commission chairperson. Now the next, let's move on to the next question. अब आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? Because इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन से लिंक है, which is linked with this topic. So I'm asking how many states and union territories are there in India? और ये क्वेश्चन है अभी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लैट में आया था ना ये 2025 में. एंड आई यूज्ड टू टीच. तो कई सारे बच्चों ने लिखा भी कि सर हाँ मैंने देखा, वी हैव वॉच्ड योर वीडियोस एंड इट वाज इजी फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? And this you must be knowing. Yes, Agastya, very good. The right answer is B, 28 states and 8 union territories. So B is the right answer. Yes, Agastya. हाँ, तो आप देख सकते हो 28 states हैं और 8 union territory है. ठीक है. So why 8? देखो एक्चुअली क्या था, 5 अगस्त 2019 से पहले there were 29 states. ठीक है. एक स्टेट माइनस हो गया, जम्मू एंड कश्मीर इज गॉन, इट इज नो मोर अ स्टेट, इट बिकेम 2 यूनियन टेरिटरी. सो एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया. ठीक है. तो और 29 से -1 हो गया, तो 28 स्टेट्स हो गया. बट यूनियन टेरिटरी 7 होता था, 2 वेर एडेड, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, सो इट बिकेम 9. तो उस हिसाब से 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी होना चाहिए. ए शुड हैव बीन द आंसर, बट नहीं, बी इज द आंसर. The reason is because December 2019 में another decision was taken. Decision ये take किया गया था कि दामन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, these two were separate union territories, they were merged. So जब दो union territory को merge करोगे तो -1 हो जाएगा again, so it becomes 8. So that is what you should know. 28 states and 8 union territories is the right answer. ठीक है, ये पता होना चाहिए. B is the right answer. These are basic things, people get confused. Simple में क्योंकि अभी recent years में कुछ changes हुआ था, इसीलिए बच्चे कई बार confuse कर जाते हैं. So you should know this. The next is the report has highlighted the fiscal health of how many states. इसीलिए मैं states और union territory पूछा था, because this report, the Fiscal Health Index report, which has just come up, has highlighted the fiscal health of all the states in union territory, all the states only, 28 states and Delhi union territory only, और none of the above. कौन सा आंसर सही है? ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकाला गया, उस सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का रिकॉर्ड डेटा निकाला है कि सिर्फ सारे स्टेट्स का या सारे स्टेट्स का और एक यूनियन टेरिटरी का, मतलब आउट ऑफ 8 सिर्फ दिल्ली का निकाला है और सारे स्टेट्स का, या नन ऑफ द अबव? व्हाट इज द आंसर? सो द डेटा रिलीज्ड बाय नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इज डील्स विद हाउ मेनी स्टेट्स? So the right answer is D, none of the above. The answer is 18 states. 18 states का डेटा निकाला है. ठीक है, not every states. ठीक है, so D is the right answer to this question. Okay, so there are 28 states and 8 union territory, but this fiscal health index is only for 18 states. They have come up. The next is how many sub-indices या parameters were used by NITI Aayog to come up with fiscal health index. कितने इंडाइसेस ये सब इंडाइसेस यूज किया गया कैलकुलेट करने के लिए फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के स्कोर को? व्हाट इज द राइट आंसर? यस, वेरी गुड अगस्त्या, 5 है ना. सो दीज आर द 5 इंडाइसेस. आप पढ़ सकते हो. क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कैसा एक्सपेंडिचर होता है ना. दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, यानी कितना अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन होता है. फिस्कल प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब समझदारी, है ना, वही फिस्कल डेफिसिट एंड ऑल, यानी कितना आमदनी से कितना खर्च कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा खर्च कर दे रहे. सो फिस्कल प्रूडेंस मींस हाउ स्मार्टली और हाउ ऑप्टिमली यू आर यूटिलाइजिंग द रेवेन्यू दैट यू आर गेटिंग. ठीक है, दैट इंडेक्स कैसा कर्ज का लेने का परफॉर्मेंस कैसा है,
how many outstanding liabilities. Outstanding liabilities means how many taxes you how many loans a state is supposed to give back, है ना, or what was its history of giving back the loan, or जिसको कहते हैं credit score, है ना, फिर debt sustainability and all. So these are the things, 5 things on which the fiscal health index is calculated. इसको पढ़ लीजिएगा because I have told you fiscal health index has come up for the first time, and that is very important. ठीक है, so इसको पढ़ने में I have attached, so if you are interested to read in detail you can read. This is the first one, quality of expenditure. This is second, revenue mobilization, you can read. This is third, fiscal prudence, मतलब उसमें खास के fiscal deficit वगैरह देखा जाता है कि fiscal deficit बहुत ज्यादा तो नहीं है. Then fourth में debt index, this is debt index, and fifth is debt sustainability and all. That is what you should be knowing, है ना. तो आपने देखा कि 18 मेजर स्टेट्स, और ये जो डेटा निकाला गया है, डेटा इज फ्रॉम द सीएजी, जो सीएजी के डेटा है ना, उससे निकाला गया है. दे हैव कैलकुलेटेड, कम अप विद द इंडेक्स एंड ऑल. ठीक है. सो व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, तमिलनाडु. फिस्कल हेल्थ में सबसे अच्छा स्टेट परफॉर्मेंस किसका है? Yes, Agastya, very good. Odisha is the right answer. Great. B is the right answer. And which state has got 18th rank in the last rank? Because only 18 states have been calculated. The data of 18 states have been calculated. So which state has got 18th rank in fiscal health index of NITI Aayog? Punjab, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan. So last rank is क्या है? So the answer is A. Punjab is the right answer, not Bihar. So A is the right answer. ठीक है, तो ये 28 स्टेट्स का, और बाकी जो देखो मैं दिखाता हूँ, अगर आप गौर से देखोगे, इफ यू सी इट केयरफुली, तो हिमालयन स्टेट्स है नॉर्थ में, ये व्हाइट है, ये सब जो पहाड़ी एरिया, हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कैलकुलेट नहीं किया गया. दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू 28 स्टेट्स में सिर्फ 18 स्टेट्स का कैलकुलेशन हुआ है, और जो बाकी 10 स्टेट्स है, यानी हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ दिया गया, है ना. तो अगर आप देखोगे, है ना, और यूनियन टेरिटरीज, है ना, मतलब ये आपको बताना चाहिए. ओके, तो दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो इसका ना पहले एक बार हुआ था, तो उसने लोगों ने डेटा में लिखा डॉक्यूमेंट में कि आरबीआई ने एक बार इस तरह का फिस्कल हेल्थ कैलकुलेट किया था हिमालयन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का 2011 इस टाइम पर. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. अर्लियर दे हैव कैलकुलेटेड. तो इस बार जो है सिर्फ 18 स्टेट्स का जो मेन लैंड स्टेट्स है उसका कैलकुलेट किया गया. इवन दिल्ली का भी नहीं कैलकुलेट किया गया. गौर से देखा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज़ सिर्फ 18 स्टेट्स का कैलकुलेट किया गया, नॉट फॉर यूनियन टेरिटरी. अब देखो, सबसे अच्छा इंडेक्स जो है, अगर आप गौर से देखोगे, सबसे ऊपर अचीवर है, फिर फ्रंट रनर है, फिर परफॉर्मर है, फिर एस्पिरेशनल है. तो सबसे टॉप पर अचीवर है, ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये ओडिशा है, ये ग्रीन कलर में है ना. दिस वन इज ओडिशा. दिस हैज गॉट रैंक 1. मैप से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज याद रखने में आसानी होता है. ठीक है. लास्ट देखो एस्पिरेशन इन रेड वाले करीब सबसे ज्यादा कौन है? देखो पंजाब. दिस इज पंजाब. ओके, सो इट हैज गॉट 18th रैंक, द लास्ट रैंक. ये दो चीज आपको एकदम याद होनी चाहिए. ठीक है. ओके, बाकी सारे का याद रखना कोई जरूरी नहीं, बट यस यू शुड ट्राई. देखो ओडिशा और छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ये 1 2 3 4 सीक्वेंस है. गुजरात, ये सारे अचीवर्स में. अचीवर्स मतलब ये वाला ग्रीन वाले. ठीक है, टॉप में जो है. उसके बाद फ्रंट रनर में महाराष्ट्र 6th रैंक, 7th रैंक उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक. फ्रंट रनर यानी सेकंड वाले जो ये वाला, दिस इज फ्रंट रनर, आप देख लो. ठीक है. थर्ड इज परफॉर्मर, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा. तो ये वाले में यहाँ पे आ गया. ठीक है. और लास्ट एस्पिरेशनल्स में केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब. तो केरला का जनरली स्पीकिंग रैंकिंग्स में अच्छा होता है. जनरली इफ यू सी in different rankings, Kerala is generally on the top, जैसे SDG index और literacy, women empowerment सेक्टर में. बट यहाँ पर फिस्कल हेल्थ पे बहुत अच्छा नहीं है. अब देखो लास्ट 4th लास्ट है उस हिसाब से. ठीक है. फिर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश भी जनरली ठीक ठाक रहता है, बट यहाँ पे फिस्कल हेल्थ के मामले में उतना अच्छा नहीं है. ठीक है. एंड द लास्ट इज पंजाब. दैट इज व्हाट यू शुड नो, एंड दिस इज द टॉप. But please be careful, this is not for all the 28 states, this is only for 18 states we have calculated. We have skipped the Himalayan and northeastern states. हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कैलकुलेशन नहीं किया गया इसमें,
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट वाला जो है उसको नहीं कैलकुलेट किया गया। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्कोर ऑफ ओडिशाज इन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स? 71, 88.4, 61.4, 67.8। ओडिशा टॉप पर है और लास्ट में पंजाब है 18th रैंक में। और स्कोर अगर याद हो जाए तो इट्स गुड, बट आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा स्कोर, आई थिंक नहीं शायद पूछे। सो 67.8 है, बस इतना पता होना चाहिए स्कोर इनका आउट ऑफ 100, ठीक है। ये सब कुछ डेटा है लास्ट ईयर इन 2022-23 से कंपेयर किया जा रहा है अर्लियर फिस्कल हेल्थ ऑफ रैंक्स जो प्रीवियस किसी और ऑर्गेनाइजेशन निकाला, बिकॉज नीति आयोग ने तो इस टाइम फर्स्ट टाइम निकाला है ना। तो आप देख सकते हो पहले कितना रैंक था, जैसे कर्नाटक का आप देखोगे 3rd रैंक है इस बार, पिछली बार 10th रैंक था, यानी इंप्रूवमेंट अच्छा खासा हुआ है। इट्स अ वेरी ग्रेट इंप्रूवमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो 17 से 13 हुआ है, इसका भी इंप्रूवमेंट अच्छा है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली एवरेज निकाला है इन लोगों ने पहले का अर्लियर का फ्रॉम डिफरेंट डेटा, ठीक है। So this is all about today's class. Now I'll be meeting you at 8 p.m. today, Sunday को, and आज ही, where those who are attempting Jamia, AMU, MHCT का एग्जाम दे रहे हो, so for them I'll be discussing quiz for geography section and all, ठीक है। So do join me. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.